slide, and then 44 seconds we have a video. So you can observe these slides that show facial paralysis. Most important. The Stanford Facial Nerve Center is a multi-specialty clinic that provides world-class treatment for patients with facial nerve dysfunction or facial paralysis. The care of facial paralysis patients is very complex. Nothing restores perfect symmetry in every nuanced motion of the face. The face is just too complex for that. The real key, though, for understanding what we would propose for you is how long it's been since the nerve injury occurred. We are here to be with the patient through their entire spectrum of care. We try to give them a realistic expectation of before and after. The initial consultation, it is about not just understanding their expectations, but also letting them know that we will be with them every step of the way, and there is hope. We are going to improve here. This is something that Stanford is uniquely poised to offer and to do very well. Jessica is a wonderful patient of ours who had a difficult road with a multiply recurrent acoustic neuroma. She received life-saving treatment from our skull-based team. Because of the aggressive nature of the tumor, it did result in complete facial paralysis on the right side of the face. She's young and healthy, has a family, has a full life, and so this was a very impactful thing. First, my biggest concern was living through it. At that point, I was just so grateful to have my life that I thought, okay, well, this is a hurdle that I'm going to have to face, not knowing really what it was going to entail. I trusted him immediately. I felt great coming to Dr. Pepper and him being able to explain what that future looked like and what to expect. Jessica saw me for a surgical consultation, and I deemed her to be appropriate for something that we call a dual nerve transfer. Jessica underwent that procedure, which is relatively new, and had an amazing first response. She's not done with her treatment yet, but we were very encouraged. Dr. Pepper wanted me to meet with Sarah, the physical therapist, and she was really helpful in giving me tools to work on, whether it be massage therapy techniques, how to train my mind to work and make those movements happen. I was fortunate to have a great partner in Sarah Stringberg. Now we offer a combined clinic. Say Papa, baby. She's able to access parts of patients' stories in ways that's hard for me to do so. So our skills are complementary. We're trying to restore what they feel was lost. That has to be holistic. It's hard to not have that
vanity that says I want to hide at home and not go anywhere. It didn't take long for me to get out there, seeing people and communicating and talking helped my recovery. There is no perfect treatment for facial paralysis, so this will be something that we are continually working on. So basically, you start from maybe a momentary concussion. I have a lab where we do exploration into how the facial nerve regenerates. This is a long-term project. We've made a lot of progress, but it's going to keep going. Coming here, I felt taken care of from the very beginning, me being able to show that I'm happy with a smile. Dr. Pepper made me feel like there was going to be a light at the end of the tunnel. So there's a lot of hope. You are watching the slides and a video about facial nerve paralysis. You know that this is a very burning topic and a very important topic. And day by day, we have seen these cases in our society. So the facial nerve is an important nerve. Other cranial nerve are also important, but facial nerve is a very important for society point of view. So first we are going to a facial nerve anatomy. That you have know that this is a mixed nerve. Mixed means that it have a motor fiber, it have a sensory fiber, and it have a secretomotor function. So that is why it is called a mixed nerve. That is called a mixed nerve. As far as for motor purpose, that is all over the face. It is a motor function. हमारा facial expression हंसना, रोना, सीटी बजाना, पानी को बाहर फेंकना मुंह से, सारी चीजें ये शो कर रही हैं यहाँ पर मोटर के फंक्शन, जितनी चीजें सारी की सारी. And the sensory which are going towards the tongue, and that show a sweet, bitter, and the sour. Sweet function is show tip of the tongue. Tip of the tongue, and sour, that is the lateral margin of the tongue, and bitterness, that is show back of the tongue. आपने देखा होगा कोई खीरा खा रही है, कड़वा है, तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता. जब काफी चबाने के बाद उसको अंदर करने की बारी आती है, so that has shown that this is, और फिर सारा मूवमेंट आउट करते हैं हम लोग कि बहुत कड़वा है. और जबान हमेशा हमारी स्वीट बताती है कि स्वीट को करते. So these are called coda tympani nerve, that is a branch of facial, so that have a sensory. And secretomotor, it means that lacrimation, lacrimal glands, submandibular gland, submental gland, and the glands which are present in the soft palate also, these are secretomotor function of facial nerve. So that is the reason behind the facial nerve, that is a mixed nerve. Now the thing is arise which is very important, that where it arises, what is its course, because first you must be know where it arises and what is its course. So it's a very easy. We have going to back to brain, that is the pons and medulla. It have a three part: intracranial part, intratemporal part, and the extracranial part. So very easy to remember, to understand. Okay. So it emerge. Motor part is from the pons, but it emerges from the junction of the pons and medulla. Arise. That it going to a posterior cranial fossa and come to the internal acoustic
meatus. Internal acoustic meatus. That is intracranial. And from the intracranial, that start intratemporal. From the internal acoustic meatus up to the styloid mastoid process, that is a course of intratemporal. And from the styloid process going to the parotid gland area, that is a extracranial course. So you can remember this nerve very easily. Cause, investigation, treatment is a very easy process. When you have in mind three things, that it have a brain codes, intertemporal code, and extra cranial code. So you have mentioned the cause very easily, very easily, very easily. Okay. So now you have a thing about the nerve, that is a mixed nerve. What is its part? What is its part? So you have know very easily that we have divided into three parts. We have divided into three parts. नर्व की आपको पोजीशन पता लग गई कैसी है, कहां से आती है, कहां तक जाती है, कैसे निकलती है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ रही. Now the thing is arise that what are the causes of a facial nerve paralysis? Causes. Causes of facial nerve paralysis. Okay? Causes of facial nerve paralysis. So you are divide the cause according to course. You go brain. So there is a brain tumor which causes the paralysis of the facial nerve. Okay? Then there is a cerebral pontine angle tumors. That is an internal acoustic meatus point where the tumor is formed, that cause. Congenital cholecytoma, because they are also settled there. So there is a cause. Multiple sclerosis, poliomyelitis. These are the causes going towards the brain side, intracranial part side, intracranial part. Now you come to the intratemporal. So in intratemporal you have see the causes is here. There is a fracture of the temporal bone. Fracture of the temporal bone, intratemporal. And then there is a other causes which are present here, that is a autogenic causes is there. Autogenic causes is there, and that is a otitis media, acute otitis media, chronic suppurative otitis media, herpes zoster oticus, malignant otitis externa. There is a surgical operations that cause the facial paralysis, and extracranial that causes parotid tumors. Very good. The main cause is here extracranial parotid tumors, trauma, birth trauma, forced delivery, accidents. These are causes, the extracranial cause. Extracranial cause. Now, the most important facial paralysis, that is known as Bell's palsy. Bell's palsy. Bell's palsy. The exact cause is unknown. Exact cause is unknown. सुबह उठे आपको फेशियल पैरालिसिस डेवलप हो गई, क्या कुलिक बताने लगी कि आपका तो मुंह को पता नहीं क्या हो गया, आपके चेहरे को पता नहीं क्या हो गया. अब ये परेशान भागी शीशे के सामने, इसने कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि मेरा जो है मुंह टेढ़ा हो रहा है.
बेल्स पैल्सी एग्जैक्ट काज है ही नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारी हेल्प के लिए कुछ काज दिए, कुछ काज हैं। वो कहता है कि ये वायरल है, जान छुड़ा ली। और वायरल में हमेशा कहते हैं एडिनो वायरस, राइनो वायरस, पाइक्रोनो वायरस, दूसरे वायरस, जो वायरस है ये काज है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होगी, किसी इन्फ्लेमेशन। वैसे हमेशा किसी चीज को बयान करने के लिए 2-3 पॉइंट आपके हमेशा जहन में रहे, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर, ठीक है। दिस इज कॉज फेशियल नर्व पैरालिसिस। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये तो इस्कीमिया की वजह से हो गया कि फेशियल नर्व के ऊपर जो है ब्लड नहीं पहुंच सका, वहां इस्कीमिया डेवलप हुआ, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हो। किसी ने कहा नहीं, यहाँ ट्विस्ट हो गया, स्पाज्म आ गया, मुड़ गई नर्व, प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हो गई। वो कहती कि एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, that can cause facial paralysis, that cause the facial paralysis. So ये बहुत सारे फैक्टर सामने आए कि फेशियल पैरालिसिस के, लेकिन आज आपको ये बता दें कि फेशियल पैरालिसिस कहाँ हथियार डाल देती है। अगर आप पैथोलॉजिकल जाएंगे तो 3 बातें याद रखें हमेशा, इससे ज्यादा नहीं इस पे जोर देना, बोलोगी पैथोलॉजी। एक है न्यूरोप्रेक्सिया, न्यूरोप्रेक्सिया, ये 100% ठीक होता है, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी ब्लैक, फिजियोलॉजी ब्लॉक कहते हैं। ये ड्यू टू इस्कीमिया, ड्यू टू स्पाज्म, कोई फूड की एलर्जी, किसी वजह से ये डेवलप हुई और विद इन 12 आवर ओके हो गया, फिजियोलॉजिकल। दूसरा है एक्सानोमेसिस, कौन सी है? इसमें जो शीट होती है, शीट वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन एक्सॉन डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन ये भी रिपेयर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, अच्छा काम हो जाता है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी नहीं रहती। तीसरी है जो है वो है खतरनाक, जिसको कहते हैं न्यूरोमेसिस, नर्व डिजेनरेट हो जाती है, नर्व डिजेनरेटेड, शीट भी गई यहां से, नर्व भी गए, जोन भी गए, गेप आ गया ना, ये इतना बड़ा गेप आ गया। इसको स्किल्ड हैंड जो है वो सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। मिसाल देंगे आपको मलाला यूसुफजई की, हमसे अच्छे हॉस्पिटल्स में है, एक बुलेट लगा था, बेल पैल्सी हुई थी, बेल कह रहा हूं, फेशियल पैल्सी हुई थी, और वो वहां पर 5 ऑपरेशन से गुजरी, लेकिन अब भी उसकी आई साइड और ये साइड शो करती है कि देयर इज अ इफेक्ट्स ऑन दैट साइड्स, ऑन साइड। तो उनके पास अच्छे इक्विपमेंट है और अच्छी सर्जरी है, अच्छे लोग हैं, उसके बावजूद भी वो उसकी रिकवरी में इतने कामयाब दिखाई नहीं दिए। तो ये बेल्स पैल्सी और ये फेशियल पैरालिसिस बज़ाहिर बहुत डेंजरस है, लेकिन इंसान क्या करे, इंसान कहां जाए? ये कान का पर्दा फटा हुआ है, ये एटिकोएंट्रल परफोरेशन है, इस परफोरेशन का इलाज सर्जरी है। ये कोलेस्टिटोमा से बनती है, और कोलेस्टिटोमा मेडिकली ट्रीट नहीं होता, सर्जिकल होता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा मुंह तो टेढ़ा हो जाएगा, सर्जरी करा ली या फलान, उस पर तो लिखा होता है कि आपने लिख के देना है कि इस ऑपरेशन में मुंह टेढ़ा हो सकता है। अब कहीं मैं सर्जरी नहीं कराती तो सर्जरी तो आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद काज करेगा फेशियल नर्व पैरालिसिस, ये ब्रेन एब्सिस करेगा, एन्सेफेलाइटिस करेगा, केफलाइटिस करेगा, कोमा में जाएगी और डेथ होगी, तो सर्जरी तो करानी पड़ेगी। फिर भी सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी आदमी जब नाकाम होता है, मजबूर होता है, जब ही आता है, कोई शौक में नहीं आता सर्जरी करना। जब वो सारी चीजें करके और ये होता है, वर्टाइगो शुरू हो गए और फेशियल नर्व चले गए, डिसफिगरमेंट शुरू होगा, तो कहां जाएगा? आएगा, आएगा, यहाँ पर आएगा, तो वो रिस्क लेगा, रिस्क
लेगा। इसीलिए तो आता है कि भाई कि कान बहता है, तो एक तो अल्लाह को खबर, एक उसको खबर जिसका कान बहता है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है कि कान बहता है। ज्यादा कान गीला हुआ, कॉटन बड से कान साफ कर लिया, मुंह किया, फिर आ गई कॉटन लगा लिया कहीं, अब वो जानती है, अल्लाह जानती है। लेकिन बाजी बहुत परेशान थी इस चीज से। उसकी कुलीग ने ये कहा कि आपने सर्जरी करानी है अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं। बाजी सर्जरी करा लें आप, हमारे पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उसके सर्जरी करा लें, ठीक हो जी। अब बाजी की सर्जरी हुई, डिजीज बहुत वास्ट थी, निकालते निकालते फेशियल को भी ट्रॉमा हुआ और बाजी को फेशियल नर्व पैरालिसिस डेवलप हुई। अब बाजी क्या करे भाई, बाजी जब कहीं जाए तो कहने लगी कि क्या हुआ, कहने लगी मुझे तो रेहाना ने बताया था कि आप ऑपरेशन करा लें, और जब से मैंने ऑपरेशन किया तो ऐसा हो गया। अब रेहाना उससे बाजी से छुपती फिरे, ये हर जगह जो है बस मुझे ही वो करती है, मैंने तो इसकी खैर ख्वाही में मशवरा दिया था, और रेहाना जो है हर जगह मुझे जो कहती है। और बाजी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है पीछे हटने लगी, घर की गैदरिंग से बचने लगी, रिश्तेदारों से दूर होने लगी, पब्लिक प्लेसेस से बाजी दूर होने लगी, पार्टीज और फंक्शन बाजी के कम हुए, और जो है शीशा देखने का शौक भी कम हुआ, क्योंकि सोसाइटी सारी डिस्टर्ब है। क्योंकि बाजी को गुस्सा जब करती है तो वो सलाहियत भी खत्म हुई, और बाजी ने जो सीटी बजानी थी वो भी चली गई, बाजी ने जो मुंह में हवा भर के कुल्ली करनी थी वो कपड़ों पे आके गिरने लगी, बाजी जो थूकती थी वो भी कपड़ों के ऊपर आके गिरने लगा, और जो है बाजी जो कभी कभी शोल्डर उचका लेती थी कपड़े पहन के वो भी ड्रिंकिंग हो गए, एंगल जो है वो टेढ़ा हो गया, सारे मसले जो है बाजी के खराब हो गए इस एक नर्व के रूट जाने से, खराब होने से, प्रॉब्लम पैदा होने से। तो अब बाजी का क्या बनेगा भाई, बाजी तो बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि यहाँ तो जो कबूल सूरतें हैं उनका नहीं बन रहा, तो बाजी का क्या बनेगा। क्योंकि यहाँ बहनें अपने भाई के लिए हूर पर ही ढूंढने जाती हैं, लेकिन भाई को कभी नहीं देखा कि वो कैसा है। सुबह उठा, पान मुंह में लेके सो गया, उसी से सर में हाथ साफ किए, जैसा है चल पड़ा, लेकिन चाहिए उनको हूर परी, ठीक है जी, बहनों को भाई के लिए चाहिए हूर परी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ भाई खुद कैसा है, हमारा भाई खुद कैसा है। इसलिए आजकल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये वर्क अगर बाहर पार्टी में कर लिया जाए तो बेहतर है, या किसी के घर पे कहीं फंक्शन में मिलाद में किसी ने देख लिया, वहां उसको फाइनल कर ले तो ज्यादा अच्छा है, बजाय घर में जाए और 14 आदमी रिजेक्ट करके आए, माशाल्लाह दिन ब दिन डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, और ये कोई अच्छा लामिया नहीं है। इसमें आप भी शामिल है, जिसको आज हूर परी करके लाए कल को वो चुड़ैल परी बन जाएगी। बहुत मेरे पास केस लेके आई बहू का, मैंने डॉक्टर साहब देखे इसकी जो है ना जबान बहुत बड़ी हो गई है, मैंने सीने पे हाथ रखा, मैंने कहा जबान बड़ी होगी, यानी नहीं बोलती बहुत है। मैं परेशान हो गया कि वाकई कोई मैक्रोग्लासिया हो गया क्या। तो जो अभी आपको हूर परी नजर आ रही है वो फिर जो है चुड़ैल परी नजर आएगी, काम नहीं करती, देर से उठती है, सोती रहती है, घर का कोई फिक्र नहीं। इससे पहले भी घर चल रहा था, लेकिन अब घर की बहुत फिक्र हो गई, घर की बहुत फिक्र हो गई है। तो भाई उन सोसाइटी में उन लोगों को क्या होगा, जो सारी हूर परियां ले लोगे तो वो आम परियों का क्या होगा। ठीक है, टाइम पास हो गया है? नहीं, नो से भी कर दिया। हाँ अभी तक टाइम तो पूरे 9 से 45, हाँ 45 का होगा, सही काम, कोई मसला नहीं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो आपका भाई हूर परा है तो हूर पर ही ले आए,
लेकिन अगर नहीं है तो वैसा ही लेके आए, ठीक है जी, जैसा है उसका। ये बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अब आ जाए आप, पैथोलॉजी 3 हो गई, बेल्स पैल्सी उसका काज हो गया। अब ये कहते हैं कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में 3 बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन है, इससे ज्यादा नहीं। पहली इन्वेस्टिगेशन का नाम है मिनिमम नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट। मिनिमम यानी आप इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई देंगे मिनिमम, और देखेंगे मसल की ट्विचिंग। क्या देखेंगी? मसल की ट्विचिंग, और कंपैरिजन करेंगे आउटसाइड पे, ठीक है जी। इसको कहते हैं मिनिमम नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट। दूसरा है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें आपने फिजियोलॉजी में जब गए होंगी तो फ्रॉग का मसल देके आपको कराया होगा, यहाँ पर भी शायद फिजियोलॉजी में। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देके मसल की एक्शन पोटेंशियल देखते हैं क्या है, कितनी है, ठीक है जी। तो ये कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और लास्ट है इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी। नाम से ही जाहिर है कि आपने नर्व एक्टिविटी चेक करनी है, इसकी नर्व के अंदर कितनी सपोर्ट बाकी है, ठीक है जी। तो ये ट्रेनिंग टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट हुए, मिनिमम, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और न्यूरोग्राफी। अब आप आ जाए मैनेजमेंट की तरफ कि इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट इसकी है, पहली रीश्योरेंस है कि बाजी को रीश्योरेंस दे दें कि आप ठीक हो जाएंगे। रीश्योरेंस, हौसला बढ़ाएं, हाँ बहुत ज्यादा डिप्रेस ना करें, मेहरबानी करें, हौसला बढ़ाइएगा, रीश्योरेंस। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू काज जो है ट्रीटमेंट करती है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर कंट्रोवर्शियल रोल है। इमीडिएटली स्टार्ट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इमीडिएटली स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लोडिंग डोज के अंदर स्टार्ट करें। सेकंड पेन है तो पेन किलर दे दें इसको। एलर्जी फील करती तो एंटी एलर्जी देंगी, वरना यहाँ पर नर्व टॉनिक जो है देंगी, मेथिकोबाल टाइप जो है, ताकि नर्व के अंदर जो है को स्टोर पैदा हो। और इसी तरह आप वेजोडायलेटर ड्रग्स देंगी, वेजोडायलेटर, खून का फ्लो बढ़े यहाँ पर। ऑलिव ऑयल मसाज, ऑलिव ऑयल मसाज, फिजियोथेरेपी कराएंगी। और लास्ट जो होप रह जाती वो है सर्जरी। सर्जरी में आप क्या करती, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, 2 को लेके यहाँ पर ब्लड क्लॉट लगा के ये स्टिच लगाएंगे अगर लगता है तो, इसको कहते हैं एंड टू एंड। सूरल नर्व ले लेते हैं यहाँ से, पांव से, जो ग्राफ्टिंग करते हैं यहाँ पर लगाने के लिए, रिसेक्शनिंग करते हैं, सुचरिंग करते हैं, डिकम्प्रेशन करते हैं, ये सारे का सारा काम आ जाएगा किसमें? सर्जरी में। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है और ये इसका फिनोमेना है, इफेक्ट्स करती है, ठीक है जी। तो ये है तो छोटी सी नर्व लेकिन बहुत अहम है। तो यहीं पर हम इसको अपने फेशियल नर्व को जो है स्टॉप करते हैं। अकॉर्डिंग टू आप के 45 मिनट्स का लेक्चर किया है, आप एडवांटेज दिया है।